Hello everyone, a very good afternoon to all of you. This is Ashwin Ramani here, research analyst at SBI Securities. I hope I'm audible and I hope you all are able to see my screen. If you all can give me a heads up in the chat box. अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, so that I know you all are with me live in the session. We'll just wait for a couple of minutes till few people join in, and then we should be good to go with today's mid-market session. Great. Sridhar ji, hi, good afternoon. Ravnik ji, all good. Perfect. Manish ji, hi, good afternoon. Jawar ji, good afternoon to you as well. So I hope your weekend was great. Official jigs, all good. Shanmuganathan ji, hi, good afternoon. Suresh ji, hi to you as well. Good afternoon. Okay. Murthy ji, good afternoon. Great. संतोष जी भी है यहाँ पे. गुड आफ्टरनून संतोष जी. ठीक है. So let's start off with the mid-market session today. So let's start off with an update on the global markets first. So Dow Jones closed around 0.22% higher on Friday. S&P 500 also closed 0.19% higher, while the Nasdaq closed around 0.31% higher. So all the three indices in the US market had a good outing on Friday. Most importantly, I think on Wednesday, that is on the 10th of December, we'll have the Federal Reserve policy announcement. The market is widely expecting a 25 basis point rate cut. I think that could cool off the yields in the US market. And, probably we'll have some impact on Indian markets here, but I don't see a huge impact considering the fact that 25 basis point is already factored in. If Fed decides against a rate cut, if Fed doesn't go for a rate cut, I think the yields will become slightly attractive in the US markets. And, probably we could then expect some outflows going out from our markets here. So I think that will be the major important trigger this week. So that is happening on December 10th, that is on Wednesday. If you look at the Dow futures, so Dow futures is flat. It's up 9 points. So we can expect a slightly flat to positive start to the US markets today. If you look at the European markets, Germany was up 0.6%. London was down 0.45%, while France was down 0.09%. If you look at Eurostox index, that was down 0.29%. So barring Germany, all the other European markets saw some profit booking. If you look at the Asian markets at the current juncture, so Nikkei is up 0.18%. Hang Seng is down 1%, roughly around 1.1%. Shanghai is up 0.5%. Kospi, again, the best performing Asian index, that is up around 1.3%. While there is some pressure that we are seeing in our markets, Nifty is down 0.62% and Sensex is down 0.44%. So post the strong closing on Friday, so no follow-through move seen in our indices today. And Nifty is just, it's around the 26,000, 26,022, while Sensex is around 85,300 at the current juncture. If we look at the macro indicators, so dollar index again continues to cool off. It trades below all the key moving averages. I think the most important level for dollar index would be the 100 mark. जब तक dollar index 100 के नीचे है, I don't think we are going to feel that kind of a pinch in our markets. But any move above 100, 100.3, 100.5, that could put some pressure on Indian markets. If you look at the US government bonds 10-year yields, so looks like the US government bonds 10-year yields is giving a trend line breakout. That is a downward sloping trend line breakout. So you can see that the yields was progressively moving down in a lower low, lower high formation. And it seems like it has just moved above the 4.15% mark.
So if it sustains above, if it goes towards 4.2, 4.3, then that can keep that can have so I think we can feel the pressure on our markets for now, but we want the yields to go down. We want the yields to go below the 4% mark. I think that's a sweet spot for us. But any move towards 4.2, 4.3, I think that could lead to some outflows coming in. And so we'll have to wait and watch. I think Wednesday will be the key day for the US government bonds 10-year yields, because there's a Federal Reserve policy announcement on Wednesday. If we look at the India VIX, so India VIX continues to cool off. I think its support is around 9.8. And on the upside, I feel as long as 13.5 is not taken out, don't see India VIX having that kind of impact on our markets here. But the major worrying sign is the dollar appreciating against the rupee. So again, we are around the 90 mark, 90.15. So don't expect the FIIs to come back to our markets as long as dollar keeps strengthening against the rupee. So we ideally want rupee to strengthen. So we want dollar to fall back to 89, 88. I think that is only when we'll expect some kind of stability, and probably we can expect momentum back to our markets. But as long as till the time dollar remains in an uptrend, I think any chances of a momentum or an FII coming back to our markets is ruled out. If you look at the crude oil prices, so crude oil prices have been moving up, but again, the overall trajectory is still down. The major support for crude oil is around 56, $57 a barrel. Uh, I think as long as it stays below the 62, $63 a barrel mark, there is no major signs to worry on that part. If you look at silver, so silver has been consolidating in the last 5 sessions, so around 59.2 on the upside and 56.4 on the downside. So this is post the sharp rally, we are seeing some kind of flag and pole pattern emerging in silver. I feel if 59 gets taken out on the upside, then we can expect silver to continue its up move, while the support is placed around the $54 an ounce mark. वाइल अगर हम गोल्ड की बात करें, सो गोल्ड भी पिछले 5 दिन से कंसोलिडेट ही कर रहा है. सो अराउंड $4,150 एन आउंस इज वेयर द सपोर्ट इज प्लेस्ड. हाँ, बट अगर हमें $4,250 एन आउंस, वो एक की रेजिस्टेंस एरिया है गोल्ड के लिए. हाँ, तो अगर गोल्ड $4,250 एन आउंस के ऊपर जाता है, देन चांसेस आर दैट वी कैन एक्सपेक्ट इवन गोल्ड प्राइसेस टू कीप मूविंग हायर. Now talking about the FII positioning, so कैश मार्केट्स में लगातार हमने देखा कि पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन से consecutively the FIIs have been selling in the cash markets. काफी रीजन हो सकते हैं, हम काफी रीजंस देख भी रहे. इसका एक रीजन आपका इंडिया यूएस के बीच जो डिलेड ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं, उसका एक कारण हो सकता है. दूसरा कारण है कि डॉलर रुपी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग है. So that usually keeps the FII away from our markets. So we can see लगभग पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 15,450 करोड़ का सेलिंग FIIs ने किया है कैश मार्केट में. और अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स में देखें, सो the net index futures contracts has gone up from 87,000 to 1,21,000. जिसके तहत अगर आप देखोगे लॉन्ग शॉर्ट रेशो में भी एक डिप आया है. ऑलमोस्ट 18.5% से हम तकरीबन 14% पर आ चुके हैं. तो ये इंडिकेट करता है कि FII के पास इंडेक्स फ्यूचर्स में से 14% लॉन्ग पोजीशंस है और 86% शॉर्ट पोजीशंस है. और ये ट्रेंड हम पिछले ऑलमोस्ट 3-4 महीने से देखते आ रहे हैं कि लॉन्ग शॉर्ट रेशो अपने लोअर एंड पे ही ओवर कर रहा है यहाँ पे. सो FIIs अभी तक पिछले 3-4 महीने से शॉर्ट पोजीशंस होल्ड करके रखे हैं. वो क्या कारण हो सकता है वो तो हमें वक्त ही बताएगा. बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर एक्सपायरी में एक शॉर्ट कवरिंग आएगी FIIs की तरफ से. उनका सेंटिमेंट चेंज होगा. चाहे वो GST कट हो, उसके बाद भी सेंटिमेंट चेंज नहीं हुआ उनका. चाहे RBI ने रेट कट किया हो तब भी चेंज नहीं हुआ. GDP नंबर स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी FIIs का सेंटिमेंट चेंज नहीं हुआ है. यील्ड्स भी यहाँ पे थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, फिर भी सेंटिमेंट चेंज नहीं हुआ है. अगर आप देखोगे निफ्टी ऑल टाइम हाइस पर है. दो इट वाज ड्रिवन बाय सेलेक्टिव हेवीवेट्स, तब भी FIIs का सेंटिमेंट चेंज नहीं हुआ है.
आई थिंक मेनली एफआईआईज जो मुझे लग रहा है देख के कि वो इंडिया यूएस का ट्रेड डील काफी एक इम्पोर्टेंट एक इवेंट हो सकता है हमारे मार्केट्स के लिए। आई थिंक दैट विल डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बाय द एफआईआईज। आई थिंक तब तक अभी भी एफआईआईज वेट एंड वॉच मोड पर है। तो जब तक हमें इंडिया यूएस ट्रेड डील के बीच में क्लैरिटी नहीं आता है तब तक शायद हमें लॉन्ग शॉर्ट रेशियो वील हैव एफआईआईज होल्डिंग मोर शॉर्ट्स कंपेयर टू द लॉन्ग पोजीशंस। नाउ टॉकिंग अबाउट निफ्टी की बात करें, सो अगर हम निफ्टी की 5 मिनट चार्ट देखें तो अगेन 26,200 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आया निफ्टी। और इसके ऊपर जाने की कोशिश किया था बट नाकामयाब रहा। वहां से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आया यहाँ पे। सो मोर ऑफ आप 5 मिनट चार्ट पर एक डबल टॉप पैटर्न बोल सकते हो जहाँ पे दो टॉप्स है, एक नेकलाइन है। जैसे ही नेकलाइन के नीचे चला गया प्राइस, द प्राइस हैज बीन मूविंग डाउन। But I feel the next important support is around 25,980, 26,000। वो एक की सपोर्ट लेवल है। हमने देखा था पिछले हफ्ते 4 दिसंबर को वही से एक रैली देखने को मिला था निफ्टी में। तो ये जो 26,980, 26,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। बट अगर हम 26,000 के नीचे जाते हैं तो हो सकता है शायद हमें थोड़ा और प्रेशर देखने मिले। इंपॉर्टेंटली पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने अपना जो की शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 20 डे ये में उसको होल्ड किया हुआ है। यहाँ पे नीचे गया था बट ऊपर क्लोज दिया, फिर ऊपर क्लोज दिया, फिर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया था, ट्रेंड लाइन के ऊपर भी एक क्लोजिंग दिया था। बट आज लग रहा है कि फिर से निफ्टी अपना 20 डे ईएमए को रीटेस्ट करेगा। सो ये 20 डे ईएमए एज लॉन्ग एज आपका 26,000, 25,980 ये लेवल जब तक निफ्टी होल्ड करता है तब तक आई डोंट थिंक एक चिंताजनक बात हो सकती है मार्केट्स के लिए। बट हाँ, अगर हम 20 डे ईएमए के नीचे क्लोज करते हैं और थोड़ा सा फॉलो थ्रू सेलिंग भी आती है उसकी तरफ, then I think we can move towards 25,800, 25,600 in the near term. So देखना पड़ेगा फिर से ये कि 20 डे ये में फिर से निफ्टी रेस्पेक्ट करता है कि नहीं। दैट विल बी द की लेवल टू वॉच आउट। और ऊपर की तरफ 26,200 हमने देखा कि ये 5 मिनट चार्ट की मैं बात करूं, 2 बार 26,200 निफ्टी तोड़ने की कोशिश किया था बट असफल रहा। बट अगर 26,200 के ऊपर जाता है निफ्टी तो हो सकता है शायद हमें एक फिर से 26,300, 26,400 तक जाने की संभावना रखता है निफ्टी। सो ऑन द डाउन साइड 26,000 दैट इज अ की लेवल टू वॉच आउट। ऑन द अपसाइड 26,200 दैट इज वेयर मेजर रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी इज। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी प्रेटी सिमिलर स्टोरी है। तो सेंसेक्स की अगर हम 5 मिनट चार्ट की बात करें सो लगभग अराउंड 85,760, 85,800 वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बना है सेंसेक्स के लिए। बिकॉज सेंसेक्स ने ये लेवल को 2 बार तोड़ने की कोशिश की। एक फ्राइडे को हमने देखा था अराउंड 85,800 के आसपास रेजिस्टेंस लिया था। उसी दिन तकरीबन 3 बजे के आसपास 85,800 फिर से टेस्ट किया था बट वही से हमने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखना स्टार्ट किया यहाँ पे सेंसेक्स पे। और सेंसेक्स आप देख सकते हो एक प्रोग्रेसिवली एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन से मूव हो रहा है। तो सेंसेक्स की अगर मैं की सपोर्ट की बात करूं डाउन साइड पे अराउंड 85,000, 85,100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा सेंसेक्स के लिए। कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी है बट सेंसेक्स की हम बात करें तो 85,100, 85,000 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। बट अगर हम 85,000 के नीचे जाते हैं तो शायद और थोड़ा सा सेलिंग टुवर्ड्स 84,800, 84,750 तक हमें देखने मिल सकता है। बट ऊपर की तरफ आई थिंक जब तक हम 85,800 के ऊपर नहीं जाते तब तक शायद ये एक साइडवेज टू बेरिश बायस हो सकता है सेंसेक्स में। बट अगर हम 85,800 पार कर जाते हैं तो आई थिंक 86,000, 86,100 भी देखने मिल सकता है इन सेंसेक्स योर। नाउ टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी, सो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर स्टोरी है। बट अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो एक क्लियर आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा था 5 मिनट्स में जहाँ पे प्राइस ने एक हायर हाई बनाया था। और अगर आप आरएसआई देखोगे तो आरएसआई ने एक लोअर हाई बनाया है। और अगर आप ये ट्रेंड लाइन भी कनेक्ट करते हो, कनेक्टिंग अगर यहाँ पे मैंने 5 दिसंबर 10:30 जो एक लो बनाया था और यहाँ पे 5 दिसंबर को 2:45 को जो लो बनाया था अगर उसको कनेक्ट किया तो आपका एक आरएसआई डाइवर्जेंस जो एक रिवर्सल का इंडिकेशन है प्लस ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन दे दिया था। आज के सुबह में ही 9:25, 9:30 के कैंडल में हमें एक ब्रेकडाउन मिला था और वही से हमने देखा कि बैंक निफ्टी में एक प्रेशर आया हुआ है। सो अराउंड 59,600 ब्रेक होते ही
we saw that Bank Nifty is moving down. So I think the next important support for Bank Nifty will be this key level here. So I feel 59,150 59,100 वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए. अगर बैंक निफ्टी ये जोन होल्ड करता है तो वेल एंड गुड, बट बिलो 59,100 आई थिंक वी कैन टेस्ट 59,000 ऑन द डाउन साइड, followed by 58,800 as well. ऊपर की तरफ आई थिंक ये 59,500 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हो जाएगा, बिकॉज 59,800 काफी दूर है. बट आई थिंक इमीडिएट बेसिस पे ये जो 59,500 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा. जब तक ये 59,500 पार नहीं होता है तब तक शायद हमें बैंक निफ्टी में वीकनेस नजर आ सकती है. सो एज लॉन्ग एज इट इज बिलो 59,500 वी कैन एक्सपेक्ट साइडवेज टू बेरिश बायस. While on the downside, 59,100 is a strong support. Below that, I think we can expect 59,000 and 58,800 as well. बैंक निफ्टी में खास बात है कि बैंक निफ्टी भी 20-day EM में रेस्पेक्ट किया था, यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दिया था. बट वी कुड सी दैट बैंक निफ्टी में यहाँ पे आज थोड़ा सा प्रेशर है. भले अभी भी 20-day EM के ऊपर है, तो शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड जो है वो अभी भी इंटैक्ट है. जस्ट दैट इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा सा प्रेशर है. बट आई फील बैंक निफ्टी 59,100 59,000 रेस्पेक्ट करना चाहिए, और वहां से शायद हमें कुछ रिवर्सल साइंस मिले तो फिर से ये ऊपर की तरफ एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में. नाउ टॉकिंग अबाउट द हीट मैप, आज अगर आप देखोगे सुबह आईटी सेक्टर पॉजिटिव में था, बट आईटी सेक्टर भी गेन्स देने के बाद वी कुड सी सम सेलिंग प्रेशर कमिंग इन ऑन एन इंट्राडे बेसिस. आज लगभग कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है. अगर आप हेवीवेट्स देखें, बैंकिंग हेवीवेट्स, तो वो भी नेगेटिव है. आपके बजाज ट्विंस आर आल्सो नेगेटिव टुडे. The other two private players, Kotak Bank, Axis Bank भी negative है. SBI is also down, Jio Finance is down, Shriram Finance is down. सिर्फ आज इंश्योरेंस कंपनीज में थोड़ा सा मोमेंटम है. अगर आप ICICI Prudential देखो, HDFC Life देखो, so these are couple of names that are doing well. Oil and gas is quiet today. Reliance, ONGC, Coal India, all is flat. अगर आप ऑटो सेक्टर भी देखें तो ऑटो भी आज प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है. मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, आइशर मोटर्स, इवन एफएमसीजी इज डाउन. हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, एफएमसीजी तो काफी टाइम से अब निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है. नेस्ले इंडिया, टाटा कंज्यूमर, बोथ आर डाउन. आईटी भी आज मॉर्निंग में सपोर्ट था, बट जैसे ही आईटी का सपोर्ट निकल गया हम देख रहे हैं कि अब मार्केट में फिर से प्रेशर आया है. सो बारिंग एचसीएल टेक विच इज अप 0.6% एंड टेक महिंद्रा विच इज अप 0.9%, वही जो दो स्टॉक जो ग्रीन में है, एंड एचडीएफसी लाइफ. बारिंग दैट सारे काउंटर्स अगर आप देखोगे वो मेजरली साइडवेज टू बेरिश ही है. फार्मा में भी कोई तेजी नहीं दिख रही है. फार्मा भी रिलेटिवली क्वाइट है. सन फार्मा, सिप्ला इज डाउन अराउंड 1%, डॉक्टर रेड्डीज डाउन 0.5%. मेटल स्टॉक्स में अगेन प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है. सुबह के ट्रेड में हिंडाल्को थोड़ा पॉजिटिव था, बट हिंडाल्को में भी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है. जेएसडब्ल्यू स्टील अराउंड 2% नीचे है. टाटा स्टील 1% नीचे है. भारतीय एयरटेल में भी आज सपोर्ट नहीं है, इट्स डाउन 0.89%. बीएल, आई थिंक डिफेंस एज एन ओवरऑल सेक्टर भी काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है. आई नो आपका काफी लोग का पसंदीदा सेक्टर है डिफेंस, बट आपको मार्केट में इमोशनली नहीं था कि आपको प्रैक्टिकली थोड़ा डिसीजंस लेना चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग टू आस्किंग मी कि डिफेंस क्या हो सकता है, ले सकता है, कब जा सकते हैं. जब डिफेंस में एक रिवर्सल आएगा तब हम रिविजिट कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए डिफेंस में ट्रेंड वीक लग रहा है. अगर आप देखोगे बीएल जो इतना दिन से स्टेडीली होल्ड कर रहा था वो भी प्रॉफिट बुकिंग में आ गया है. So BL is around 3.6%. Indigo, of course, though the operations are kind of stabilizing, उनको भी थोड़ा वक्त लगेगा थोड़ा स्टेबल होने. So even Indigo is down around 7%. हो सकता है ये क्वार्टर थोड़ा नेगेटिव हो सकता है इंडिगो के लिए. पावर ग्रिड इज डाउन 1.69%. एनटीपीसी भी डाउन है. अगर आप देखोगे अदानी, Adani is also down. Asian Paints is down. I think that is the only strongest looking stock from the FMCG space. Both the healthcare stocks are down as well. Zomato again continues to see more profit booking. That is also down around 2.3%. So barring HDFC Life, HCL Tech and Tech Mahindra, none of these stocks or the sectors are in green today. So looks like, so जब तक आईटी, बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, ऑटो, जब तक इन सेक्टर्स में बाइंग नहीं आती है या कि हेवीवेट्स में बाइंग नहीं आती है, शायद हम साइडवेज टू नेगेटिव ही रह सकते हैं आज के सेशन में.
नाउ टॉकिंग अबाउट द की सेक्टर्स टू वॉच, पिछले 5 दिन की अगर हम बात करें, सो आईटी का इज द ओनली स्ट्रॉन्गेस्ट लुकिंग सेक्टर ऑफ द लॉट. दूसरा एक एडवांटेज ये भी है कि आईटी में जब डॉलर 90 तक पहुंच गया है, तो यूजुअली अ हायर डॉलर यूजुअली हेल्प्स द आईटी कंपनीज. सो आईटी इज अप अराउंड 3%. सीएनएक्स फाइनेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में भी एक उसका रेशियो चार्ट काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, हम डिस्कस करेंगे. सो जैसे आज इंश्योरेंस कंपनीज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एचडीएफसी लाइफ, ये सारे दो काउंटर्स रिलेटिवली पॉजिटिव लग रहे हैं. एंड प्राइवेट बैंक्स भी हम देख रहे हैं कि भले ही आज के दिन में एक प्रॉफिट बुकिंग है, बट ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री जैसे कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक, ये सारे सेक्टर्स पॉजिटिव है. सो आपका फाइनेंशियल सर्विसेज, बीएफएसआई स्पेस एंड आईटी, दीज आर द टू स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स करंटली. बट अगर मैं एकदम वीक सेक्टर की बात करूं तो वो रियल्टी है. रेट कट के बावजूद आप देख रहे हो कि ऑटो स्टॉक्स में तेजी नहीं है, रियल्टी स्टॉक्स में तेजी नहीं है, जो कि रेट सेंसिटिव सेक्टर्स है. सो रियल्टी इज डाउन 3%. डिफेंस अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को. सो डोंट गो फॉर बॉटम फिशिंग इन डिफेंस स्टॉक्स, वेट फॉर सम रिवर्सल साइंस. डिफेंस इज डाउन अराउंड 4%. पीएसयू में भी आप काफी एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद अब ऐसे लग रहा है कि इवन पीएसयू में भी आप प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है. जैसे इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक काफी टाइम से ऊपर था. 2-3 महीना तक पीएसयू बैंक्स में हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा गया था. बट अब लग रहा है कि थोड़ा सा हाई से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है पीएसयू में. एंड इवन टूरिज्म स्पेस इज डाउन. टूरिज्म भी ऑलमोस्ट 5% नीचे है. सो अवॉइड टूरिज्म, डिफेंस, रियल्टी, पीएसयूज, financial services, private banks, and IT here. So these are the sectors that are relatively doing well. Now, if we look at the key sectors to watch, the key stocks to focus on, relatively, सबसे पहले तो मैं आपका रियल्टी इंडेक्स की बात करता हूँ. सो अगर हम निफ्टी रियल्टी देखें, सो रियल्टी हैज गिवन अ फ्रेश ब्रेकडाउन टुडे. सो रेट कट के बावजूद ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था अराउंड 880 के आसपास. अब वो भी ब्रेक होके नीचे गया. रियल्टी इंडेक्स का आरएसआई भी एकदम नीचे है. आप देखोगे एमएसीडी लाइन इज बिलो द जीरो लाइन एंड सिग्नल लाइन. सो रियल्टी सेक्टर इज अंडर परफॉर्मिंग, दो देयर इज वन इंपॉर्टेंट सपोर्ट. आई थिंक रियल्टी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो अराउंड 860 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इंडेक्स का. बट अगर इंडेक्स 860 भी तोड़ता है, तो हो सकता है शायद हम टुवर्ड्स 800 लेवल्स तक आए. सो अवॉइड रियल्टी सेक्टर फॉर नाउ. हो काफी लोग जब ये फॉल आता है तो पीपल लुक टू बॉटम फिश स्टॉक्स फ्रॉम द सेक्टर्स दैट आर फॉलिंग. So that is not at all advisable. Wait for some reversal signs. Don't. It's like you're like catching a falling knife at this point. सो अगर आपके रियल्टी स्टॉक्स में कोई पसंदीदा स्टॉक्स है तो आप आपके वॉच लिस्ट में रख सकते हो. बट जैसे ही रियल्टी सेक्टर टर्न होता है, जैसे ही उसमें एक रिवर्सल साइंस आते हैं, दैट इज द टाइम देन यू कैन कंसिडर लुकिंग इनटू. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स बेटर टू अवॉइड रियल्टी, डिफेंस, इंडिया टूरिज्म, पीएसयू बैंक्स, because these are the sectors that are significantly underperforming Nifty. बट दूसरी सेक्टर की मैं अगर बात करूं तो वो आपका फाइनेंशियल सर्विसेज बाय निफ्टी. इसका अगर मैं रेशियो चार्ट देखूं, सो रेशियो चार्ट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है. अगर आप फाइनेंशियल बाय निफ्टी देखोगे तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें मिला है. सो ऑल योर स्टॉक्स फ्रॉम द फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस, उस पर थोड़ा नजर रखना. बिकॉज ये ऐसे वीक मार्केट में ये एक ऐसा इकलौता सेक्टर है अलॉन्ग विद आईटी जो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है. दैट इज फाइनेंशियल सर्विसेज एंड आईटी. दीज आर द ओनली टू स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स करंटली. बाकी सारे सेक्टर्स में या तो इधर साइडवेज है या तो उनमें एक नेगेटिव मोमेंटम चल रहा है. बट इफ आई हैव टू टॉक अबाउट सम की सेक्टर्स, वन वुड बी बीएसई. बीएसई हमने देखा आज सुबह के सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग था, बट अब प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक ग्रेवस्टोन डोजी लाइक कैंडल बनते हुए नजर आया डेली चार्ट पर. बट अभी भी पीएसई 20 डे ईएमए के ऊपर है. इसका एक रेजिस्टेंस है अराउंड 2950 के आसपास. अगर बीएसई 2950 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है हमें एक ऊपर की तरफ एक तेजी वाला मोमेंटम देखने मिले. बट ऑन दी डाउन साइड ये जो 2790 2800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा. तो जब तक ये सपोर्ट लेवल होल्ड करता है तब तक बीएसई का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग रह सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट लेमन ट्री, अगेन लेमन ट्री टूरिज्म इंडेक्स में ही आता है. भले टूरिज्म अंडर परफॉर्मिंग है, बट अगर आप लेमन ट्री का चार्ट देखोगे तो 200 डे ये में से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आया है. आज सुबह के सेशन में इनफैक्ट पिछले 4 दिन के कंसोलिडेशन के ऊपर था, बट फिर से वही रेंज में आ गया अब लेमन ट्री. तो लेमन ट्री के लिए काफी क्रूशियल
होगा कि निफ्टी वो नीचे की तरफ 160 का लेवल होल्ड करे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट अगर फिर से एलिमेंट्री टुवर्ड्स 164 165 के ऊपर क्लोज देता है, देन चांसेस आर दैट वी कैन एक्सपेक्ट 170 172 लेवल्स इन एलिमेंट्री इन द शॉर्ट टर्म। अपार्ट फ्रॉम दैट एमसीएक्स, एमसीएक्स भी सुबह के सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। ऐसे लग रहा था कि पिछले 5 दिन का कंसोलिडेशन के ऊपर हमें एक ब्रेकआउट देके एक ऊपर की तरफ क्लोज मिले, बट जैसे बीएसई ऊपर जाके नीचे आया, वैसे ही आप एमसीएक्स में भी मॉर्निंग ट्रेड में ऊपर था और वहीं से हाई लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आया। सारे स्टॉक्स में यही ट्रेंड दिख रहे हैं। जो भी स्टॉक्स इनिशियली ऊपर थे, वहां से एक सेलिंग प्रेशर हैज काइंड ऑफ ड्रैग्ड द प्राइसेस डाउन देयर। दैट इज व्हाट यू विल सी इन मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स टुडे। अगर हम एमसीएक्स की बात करें, तो एमसीएक्स भी ऊपर था, एंड अगेन इट हैज कम बिलो, बट आई थिंक द की लेवल टू वॉच आउट इन एमसीएक्स वुड बी दिस हाई। ये जो हाई है अराउंड 10,490 10,500, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर 10,500 के ऊपर जाते हैं तो हो सकता है एमसीएक्स में भी एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिले ऑन दी अपसाइड। अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन कमिंस भी मॉर्निंग के सेशन में स्ट्रॉन्ग था। उसमें भी आप देखोगे एक ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल है, जहाँ पे इनिशियली काफी ऊपर था, बायर्स एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में थे, बट वहां से सेलर्स ने आके प्राइस को थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश कर दिया है यहाँ पे। बट आई थिंक ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है कमिंस के लिए। जो 20 डे ईएम है 4,400 का, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। बट अगर कमिंस फिर से अगर ये 4,550 4,570 के ऊपर क्लोज देता है, then chances are that we can see Cummins India continuing its up move later. The other stock that is looking positive, I think chart wise अगर आप देखोगे, Policy Bazaar is one stock that is looking strong. Policy Bazaar दो बार 1865 1875 के आसपास रेजिस्टेंस लिया था, और फ्राइडे के सेशन में एक ब्रेकआउट मिला था। आज एक फॉलो थ्रू बाइंग भी नजर आ रही है। ऐसा नहीं कि ये स्टॉक में भी अगर आप देखोगे हाई से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है, बट नेवरदलेस एक 1900 के ऊपर क्लोज होना काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है पॉलिसी बाजार के लिए। आरएसआई 60 के ऊपर है, वो एक काफी पॉजिटिव साइन है। अगर आप देखोगे डीआई लाइंस, DI plus is well above DI minus here, which is again a positive sign. MACD line भी जीरो लाइन के ऊपर है। सो आई फील पॉलिसी बाजार 1970 तक शायद जा सकता है ऊपर की तरफ, बट अगर 1970 में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, पिछले दो बार 1970 से हमें एक सेलिंग नजर आई थी, बट अगर 1970 के ऊपर ब्रेकआउट देता है, देन आई थिंक पॉलिसी बाजार इज वन स्टॉक दैट कैन कंटिन्यू टू मूव अप। द नेक्स्ट स्टॉक इज आईसीआईसीआई प्रूली। जैसे ये सुबह के सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग था, तो उसमें भी यही हुआ है। देखो आप एक सारे स्टॉक्स में एक लॉन्ग अपर विक आपको दिखेगा, और वही से एक प्रॉफिट बुकिंग आई है सेकेंड हाफ में, नॉट इवन सेकेंड हाफ बट टुवर्ड्स द लास्ट 1 hour में ऑलमोस्ट ऑल द स्टॉक्स हैव गिवन अप देयर अर्लियर गेन्स। So I think this level will be a strong level for ICICI Prudential, that is 635 640, वो एक strong resistance है, and नीचे की तरफ around 600 605 is a strong support. I think any move above 635 can push the prices higher, and I think we can move towards 650 levels in the short term. Apart from that, Infosys, like I said, IT एक strong sector है apart from financial services. So IT Infosys की अगर मैं बात करूँ, तो इन्फोसिस भी एक ब्रेकआउट के बाद एक कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट दिया था, अगेन अगर 2 दिन से फिर से एक साइडवेज बोर्ड में चला गया है यहाँ पे। सो आई थिंक एक फॉलो थ्रू की कमी है। आई थिंक अगर 1630 के ऊपर फिर से इन्फोसिस जाता है, then I feel Infosys can keep moving higher, and we can expect 1670 1680 levels in the short term. और ये जो 200 डे ये में 1565 1570, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा ये स्टॉक के लिए। And the last stock that I want to discuss is Ajanta Pharma, probably one of the pharma names that is doing well. So Ajanta Pharma again एक strong bottom बनाया था around 2380 के आसपास, फिर एक 200 डे ये में तक आया था, बट वहां से 200 डे ये में क्रॉस नहीं कर पाया, फिर से वो सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे आ गया था यहाँ पे, and again it has attempted a pullback. Now it has again closed above its previous swing high, which is a good sign, और 200 डे ये में के भी ऊपर है। सो ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव लग रहा है अजंता फार्मा के लिए। आई थिंक ये जब तक ये 2620 के ऊपर होल्ड करता है, the trend is likely to be positive. So 2620 is a strong support for Ajanta Pharma,
and we can expect 2740, 2750 levels in the short term for this particular counter. So that was all about today's mid market session. I hope it was informative. And that's all from today's mid market. Now, let us start off with our question and answer session. If you have any queries, any doubts, do let me know in the chat box, and I'll be happy to answer them. Gyanmay ji saying Lloyd's Enterprise. Okay, let me look at Lloyd's. Are you okay? Lloyd's की अगर मैं सी डाउन ट्रेंड में आई थिंक इट्स या आई थिंक लुक्स लाइक थोड़ा और नीचे जा सकता है, मे बी टुवर्ड्स 51-50 तक ये स्टॉक जा सकता है. सो बेटर टू अवॉइड. तो जब तक ये 60 के ऊपर पार नहीं करेगा तब तक इसका ट्रेंड डाउन ही रह सकता है. ज्ञानमय जी. Ramning ji is asking, sir, do you see cement sector at cheap valuations currently? JSW, Orient Cement, or shall we wait for see cement? See, if let's look at all the major players. So, अगर आप देखोगे Ultra Cement, trend is down. It's moving below all the key moving averages. अगर हम JSW Cement भी देखें, अगर overall infra space में भी थोड़ा सा correction है रमनिक जी. अभी अगर आप देखोगे JSW Cement is also down. It's at 110 year. और अगर हम ओरिएंट सीमेंट की बात करें, सो ओरिएंट सीमेंट का भी ट्रेंड काफी नीचे, देखो सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे. तो ओनली सीमेंट सेक्टर आई थिंक ग्रासिम की अगर हम बात करें, सो ग्रासिम भी ऑलमोस्ट 200 ईएमए के आसपास है, एकदम क्रिटिकल सपोर्ट लेवल के आसपास है. अगर ये 2700 के नीचे जाता है तो और प्रेशर आ सकता है. But the only cement sector that I feel is strong right now is Indian Cements, because Indian Cements में Friday session was the last Thursday session was positive, almost 10% ऊपर था. और बट अगर आप देखोगे इवन इंडिया सीमेंट्स में भी रिलेटिवली ट्रेंड फ्लैट ही है. आई थिंक वी नीड अ ब्रेकआउट अबाउट 425 430. आई थिंक वंस वी गेट दैट, चांसेस आर दैट इट कैन गो अप. बट आइडियली वेट इट आउट. रमनिक जी थोड़ा रिवर्सल साइंस देखते हैं. आई थिंक इट्स बेटर टू अवॉइड सीमेंट स्पेस फॉर नाउ. Do FIs historically book profit during the month? Have Russian FI started investing? No, doesn't look like they have started here, though they have been allowed to invest in Nifty companies. FIIs historically, see, usually for the month of December, they are relatively quiet, because in US and almost all of Europe, December is a holiday season for them. I think they will probably work until December 15-20. And usually the last 10 days and the first week of Jan is relatively quiet for US and Europe markets. So, and even अगर आप देखोगे Indian markets में भी volume and liquidity कम ही होता है in the month of December. I don't have any particular figures as to whether do FIs historically book profits in the month of December. I think we'll have to look at the cash figures here, so we can see. So what the FIIs do here is, let's see, FII cash activity. Then I think we can see what the FIIs do, and probably then we could make out. So we can see December here. I think we can look at December 4th. Maybe let's see December 2015 to maybe we'll look at December 2025. Probably here we can see what the FIIs do here, but I don't know, it's not working currently. Let's see, this will be December. Let me see December 2015 again. Well, let's make it as December. Let's make it as 2025. I'll click on go. I don't know why it is not showing me here. So maybe we can see December as of today. Right now they are at the sell figure of 10,400 crores. Now, if we go down and if we see what they did last December, so they sold around 16,982 crores last year. If we look at December 23, they were buyers. I think good amount of buying, around 32 crores in 23. If we look at 22, again, they were sellers of 14,200 crores. If we look at 21, again, 35,492 crores of selling is what they did in 21.
In 2020, again, that was the COVID year, so they bought around 48,000 crores. Even in 2019, mild buying of 694 crores. If we go to 2019, again, 2018 has been selling. So more or less, barring a couple of months, FIIs majorly have been sellers in the month of December. Harish ji says TMCV is good. I think TMC is, I think, not passenger vehicles, but I think commercial vehicles is good here. I think there was a report. I think we recently released a report as well. I think we have initiated coverage. Let me see. So how I don't know how many of you all track our Rockstar results. So you can go to research. You'll go to fundamental research, and so the fundamental team, they come up with thematic reports. So all the Rockstar of the last quarter. So there is a thematic that we recently released on the 5th of December. So if you click on this PDF here, I think everyone should take a read, because it's very, very. So I think Tata Motors CV. So we have just given a buy recommendation in Tata Motors commercial vehicles for a potential upside of around 12%. Then IDFC First Bank, Phoenix Mills, M&M Finance, NBFC, Privi Specialty Chemicals, Sequence Scientific, Parag Milk, Interact, Carraro India. So these are based on quarter two numbers. So every quarter, after every quarter, there is Rockstar results. So all the Rockstars of those particular quarters. So we release out a report. It's a 77-pager report, guys. All the details are given in this report. Do look at this. I think this will be a great value add for anyone who wants to have an insight on these companies. संतोष जी, avoid mid cap and small cap दोनों में underperformance है. So small cap is significantly underperforming Nifty, even mid cap is underperforming. So I think better stick to Nifty and select large cap names at the current level. Anjali ma'am is asking for ICICI target. So SL, I think around 1360 is where the SL is. On the upside, I think we can move towards 1435, 1440 levels in the short term. SPML infra avoid, Champaji. I think 185 is a strong support. The overall trend is down. Better to avoid SPML infra. I think it is a routine profit booking only, Manohar ji. I think Eternal Nykaa आप दोनों देखोगे, Eternal तो काफी टाइम से ऊपर भाग गया था. But Eternal again, it's I think it's dropped below its 200-day EMA. So wait for some signs of stability and some reversal here. I don't think it's a correction. It's just that एक routine profit booking phase में overall market sentiment भी इतना कुछ खास positive नहीं है. Like the overall rally is just driven by some few heavyweight names. The broad-based participation is still lacking. I think the same goes for Nykaa as well. The only new age company that is probably doing well is Paytm and Policy Bazaar. Barring that, even Nykaa may be 273 से एक profit booking नजर आया. So around 240 is a support for Nykaa here. Rakesh ji saying we cannot ignore the fact that primary market IPO is absorbing a lot of liquidity. Yeah, that could also be one particular reason. And also there are a lot of IPOs that are also lined up in the month of December. So yeah, I think that liquidity again, I think is FII is majorly they bring in the liquidity here, and their action is missing in our market. So yes, DIIs and retails are participating in this rally. But in a post the ban on Jane Street, we could see there is this choppiness in the markets here. We are not getting the required momentum. So majorly a large of money is probably gone into large caps, small caps and mid caps, are significantly underperforming. It's only the few key heavyweight stocks that are driving the markets here. So the overall broad-based participation is still lacking. Plus the delayed talks between India and US, dollar at 90, Fed going for a rate cut, plus the Japanese bond. I think Japan looks like I think December 19 is when Bank of Japan will announce their policy. That will also be a key event to watch out. So they'll probably hike their interest rates. Obviously, their yields will go up, and the whole yen carry trade will kind of play out. I'm not sure if it is playing out now, but I think post the Federal Reserve, it's the Bank of Japan's policy announcement on 19.
So yes, so there are a lot of uncertainties still in the market. We are not over, all the positives here. So there is still, I think, still good thing is our inflation is under control. GDP numbers have come well, though the nominal GDP numbers have still not picked up. So earnings again, markets will be keenly looking at how the quarter three, is going to be. So we'll have to wait and see. I think unless and until FIIs don't come back well and truly in our markets, that concern is always going to be there. I think that liquidity, FIIs are the ones who bring in that liquidity, and then if they are not present, I think we could see some impact. I'm not saying a major impact, but there is definitely some impact with them. Sir, what's your opinion on government policies regarding rare earth minerals? So it's good from a long term perspective. It's good. अगर हम GMDC बात करें, so फिलहाल के लिए there is some profit booking in GMDC or but around 450 455 is where the next support is. I think any move above 565 570, I think rare earth is probably one sector that will remain in focus going forward. And recently, I think if you remember, Afghanistan also met with India. I think I'm sure there might be some deal with Afghanistan regarding rare earth. Even US is trying for I think some improved relations with China also might help us in that. I think India too has some reserves as far as the rare earth is concerned. So overall, and I think it's positive. I think it's one sector that you should be keenly looking at. Even if you look at MOIL, MOIL is also right now it's underperforming. It's trading below its moving average, all the key moving averages. So around 300, 315 is where the support is. I think any move below that can lead to some pressure in the short term. But I think from a long term perspective, wait for some good reversal signs, wait for the overall market sentiment to improve. Probably then you can have some allocation from the rare earth space in your portfolio. Sir, stocks that may benefit from Indigo. See, I think Spice, I'm not very have a very strong conviction on Spice. Spice again. See, I think Indigo is a good. अगर आपको याद है, I think Indigo will come out of this mess. I think Indigo is too strong, to fail. Considering the fact that they have around 64% market share. अगर आपको याद है कुछ साल पहले लेड का एक आया था जब मैगी has a lot of lead content. I think Nestle dropped from around 13,000 to 6,000 if you remember. And I think they were able to bounce back. There were a lot of other names, even ITC ka, Maggie packets aate the tabhi. Nobody tried to dethrone Maggie there. And Nestle India now you see from around 6,000, I think Nestle is at a different level today. So I think these are the opportunities, and for Indigo is again fundamentally strong company. I'm pretty sure they will come out of this issue here. So again, Nestle is one particular stock which bounced back from that negative news. So I don't think you should be looking beyond Indigo. Yes, Indigo is under pressure. It's down probably. And Indigo was quite overpriced as well. And if you see, if you get some any reversal signs today, it's down at around 4,850. I'm pretty sure Indigo, from a long-term perspective, it will, definitely bounce back. I think same thing that happened with Nestle. Other players tried to cash in. The same thing happened with Asian Paints as well. So when Birla Opus came in, everyone thought Asian Paints might lose out on the market share. Their market share even dropped from 58% to 52%. But if you look at the recent quarterly numbers by Asian Paints, I think they are well and truly back. Their margins have improved. I think they have gotten the market share, and that's the only sector or the stock that is doing well in the FMCG space. So all these sectors, your heavyweight names, they may look tired, but I think it's their experience and it's the wisdom that they carry, and it's the legacy that drives the businesses higher. So they have governed by good promoters, good fundamentally sound companies. Same thing happened with TCS as well when if you remember the whole Vishal Sikka episode.
and I think even TCS, bounced back from that level. So all these companies, these events actually give you an opportunity to invest in fundamentally sound companies at a cheaper price here. So avoid bottom fishing for now. Wait for some reversal. That definitely there'll be stability coming in Indigo. And I think once you get that, probably who knows, Indigo is at 4,800, 4,900 today. Maybe in another 4 or 5 years, who knows, we may be seeing Indigo at 10,000, 11,000, and we may be past these issues here. Obviously they have to comply with the norms, and I'm pretty sure with the management and with the sound business principles that they run in, I'm pretty sure Indigo might will definitely bounce back from these. Sudhakar ji, some feel lower inflation is not good for equities. What is your view? I think it's more than inflation. I feel is the GDP numbers. I think once the real GDP, like I said, the difference between real and nominal, though the inflation is under control, but I feel the dollar needs to cool off a bit. That is one concern. Second is I feel is the nominal GDP. The earnings should improve. I think that is the most important thing for equities. It's not the inflation. The markets are not reacting on high inflation currently. It's the corporate earnings that needs to improve. I think, and the dollar needs to weaken a bit. So as long as this happens, I feel that could be the trigger for the next rally. Monopoly businesses are generally bad for consumers. Yeah, that's true. So we don't want pricing command with one particular. But again, yeah, that's there. I think monopoly business, duopoly is also, we have Swiggy and Eternal. AI also, there are so many companies that have come in AI now. So there is also an AI bubble that is happening there in US. So we'll have to wait and watch out. But I feel don't be too harsh on Indigo. I think that 65% market share is not going to go down drastically. Just that wait for some time, wait for some reversal, and I feel Indigo might be back in action soon. Okay, guys. So I guess that's all from today's mid-market session. I hope it was informative, and see you again tomorrow at 12:30 for our mid-market. And tomorrow we'll have one session in the evening as well. So bear put ladder spread is the strategy that we'll be discussing tomorrow at 4 o'clock. So two sessions tomorrow, 12:30 and 4 o'clock here. So bye, guys. Take care. See you, and have a great day ahead. Take care, guys. Stay safe.